اچھا تو آپ سچ بات بتا دو یس جی. اب یہ تو سب کیا ہے, ہم دلیپ صاحب سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کی تعریف کریں گے, آپ اتنے ویٹرن اور اتنے اچھے فلم میکر ہیں. آپ سے پوچھیں گے, آپ بھی ان کی تعریف ہی کریں گے کریٹیوٹی کی. اور آپ بار بار میری طرف انگلی پوائنٹ کر کے کیوں بولتے, اتنے پنکچوئل ہوا کرتے تھے. آنیسٹی دیکھو ایکٹر کی اس زمانے. اب پلیز کوئی بیٹھا نہیں ہو نا, تم اکیلے بیٹھے میرے ساتھ. میں ڈر سے جاتا ہوں کہ مجھے کچھ سکھا رہے ہو آپ. بٹ سچ بات یہ بتاؤ کہ آپ کا اور دلیپ صاحب کا ایکچوئل ناتا کیا تھا, کس وجہ سے دوستی تھی؟ یہ سب تو کریٹو باتیں ہو گئی, جینوئنلی جو بتائی تھی آپ نے مجھے. اب برا نہیں مان جائے گا. نہیں نہیں, سچ بتا دوں, ایبسلیوٹلی. ہم دونوں کو کھانے کا بہت شوق ہے. اور کوئی ریزن نہیں تھا نا ساتھ میں کام کرنے کا, کوئی کریٹو ریزن نہیں تھا. کچھ گریٹ ایکٹر میں اچھا ڈائریکٹر میں کچھ نہیں. نیا دور میں ہم جاتے تھے, وہ بولتے تھے دیکھو تم شام کو آ جانا. ہم ٹھہرے تھے ایک ویٹرنری ہاسپٹل میں, چھوٹی چھوٹی کارنر روم میں. میں چکن بناؤں گا اور تم ڈائریکٹ بولتے رہنا, میں یاد کرتا رہوں گا. اس کو ہم چکن کھا لیں گے. ہم لوگوں کو بنائیں گے بھائی چکن ختم ہو گیا, ہم دونوں کا. مجھے یاد ہے میری ڈاک کی سیلیبریٹی ہوئی باندرا ٹاکس میں, وہ اسپیچ کر رہے تھے. دیکھو بھائی اچھا ڈائریکٹر اچھا ایکٹر بننے کا ایک ہی سیکرٹ ہے, آدمی کو شوق کتنا ہے کھانے کا. ہم شوٹنگ کرتے تھے, ہم 18 انڈے کا آملیٹ کھاتے تھے. 18 انڈوں کا آملیٹ کھاتے ہیں. اور ایک جو ریسیپی آج بھی میری لائف کی بہت امپورٹنٹ ریسیپی ہے کہ قیمے ایک انڈر فرائیڈ ایگ, قیمہ بناؤ, اس کو فرائیڈ ایگ ڈال دو. واہ, تو وہ کچھ ٹیسٹی بات ہے. یہ ان کی دی ہوئی ریسیپی ہے. لیکن جو ایتم اسسٹنٹ تھا نیا دور میں, بہت اچھا تھی کہ اتنا گریٹ ایکٹر میں کام کروں. جب پروڈیوسر بن گیا تو میں نے مشال کام کیا. میں آج بھی فیل کرتا ہوں وہ جو سین جب ویدا از ڈائنگ اینڈ ہی از رننگ آفٹر کارز, میری بیوی کو بچا لو. وی ڈیڈ ان 4 nights ون سین اونلی, بیکاز نائٹس شوٹنگ کر سکتے تھے. اور دلیپ صاحب کو اس وقت کہ وہ رات کو 4 بجے تک کام تو نہیں کریں گے نا, 9, 12, 1, 2 بجے تک کام. 4 days میں ایک سین کیا, اور اس کی کنسسٹنسی, اس کی پرفارمنس لیول آج بھی کاپی بک پرفارمنس ہے. اس کچھ عجیب پرفارمنس ہو. اور وہ جب سے ہم نیا دور میں گئے تھے ایز اے اسسٹنٹ, ہی از ٹریٹڈ لائک اے ینگر بردر ٹو می. آئی لک اپ ٹو میرے ایلڈر بردر. آج 50 ایئرس سے اوپر ہو گئے. 56 میں نیا دور بنی تھی, 57 میں ریلیز ہوئی تھی. آج 55 ایئرس ہو گئے ہیں. وہی رشتہ ہے ہم دونوں کا, کام کریں یا نہ کریں. رشتوں میں فاصلے کام سے نہیں آتے, رشتوں کے فاصلے اور بھی آتے ہیں. قیمہ انڈا ضرور ساتھ میں کھائیں گے, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. قیمہ جو ہے وہ زندگی بھر رہے گا نا, فلم میں چلے گی. Okay, and you know this was also the phase, I think, the 80s when اور یہ بات سب کو one should know that he's not been left without failure. Yash ji has also seen a lot of failure, times when films and work didn't go well, and 80s was a phase like that, near Mashal and some other films he made after that. لیکن پھر بھی یس جی چلتے رہے اسٹرانگ, اور ایک ہی ان کا وشواس ہے جو میں بار بار سنتا ہوں, آپ بھی انٹرویو میں سن رہے ہوں گے, کہ جو دل میں آئے سچے دل سے آنیسٹی سے وہ کرو. اینڈ دین کیم کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ فرام دا کائنڈ آف انٹینس فلمز جو آپ بنا رہے تھے اس وقت. ایک دم آپ نے الگ سا کچھ دور شروع کر دیا, اور لو اسٹوریز کا دور جو ایک شروع ہو گیا. اینڈ دا فلم دیٹ یو میڈ واز چاندنی. سو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ اس میں آپ نے مجھے ایک بڑی اچھی کہانی بتائی تھی اس کے بارے میں. At that time I was making Vijay. One day I was traveling from my home to the city for some work. میں چلتا چلتا گاڑی میں دیکھا ہوردنگ چل رہے ہیں, بورڈز لگ رہے ہیں, پوسٹر لگ رہے ہیں. ہیرو کی شکلیں وہی ہیں, ہیرو سیم ہے پوسٹرز میں. ویپن بدل رہے ہیں, کبھی چاقو ہے, کبھی تلوار ہے, کبھی بندوق ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی بم ہے, کچھ. مجھے لگا میں کیا کر رہا ہوں, واٹ ایم آئی ڈوئنگ. آئی ایم میکنگ سیم فلم بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اے سکسیسفل فلم. یہ بھی ایک ایکشن فلم ہے, لڑائی جھگڑا ڈرامہ. سافٹنیس کہاں جو میرے اندر تھی, وہ کہاں چلے گی؟ اس لیے کہ میں کمپرومائز کرنا چاہوں لائف کے ساتھ. لوگ بولتے ہیں فائٹس ہائی لائٹس ہوتی ہیں. یار فائٹس ہائی لائٹس ہوتی ہیں تو گانا بھی ہائی لائٹ سے ہو سکتا ہے اگر اچھا گانا ہوگا تو. I knew I was making a film which is not from my heart. I knew I was making a wrong film for my mind, for my heart.
But before I reached home, I decided, no, I'll make a film in which I believe in. A hardcore romantic film with 9 songs, that were 9 highlights. And I thought of Chandni. I'll make this film. But you had the honesty enough to realize that you were going wrong and maybe you were compromising. I was compromising because I was trying to make a hit film. I was not trying to make a good film. The difference between good film and hit film is that you compromise in every step. I said, let me make my films on my own terms. इसमें एक छोटी सी स्टोरी ये भी है. When picture was ready, in that picture Vinod Khanna was there. Some distributors came. There's no action if Vinod Khanna is there. I was not a big producer at that time, not a successful director that way. I said, but pictures don't release after 2 weeks. आप चाहते क्या है? I can't do anything else. No picture is made. हाँ, Vinod Khanna is there. And there is no action. There is also there. He said, आप पैसे reduce कर दीजिए. Okay. You reduce the money. I was vulnerable. I was a producer. At that stage, I couldn't. Okay. पैसे reduce कर दीजिए. पर देना आप भी करिए. अगर पैसे reduce करूँगा, अगर पिक्चर हिट होगी तो मैं कमीशन ज़्यादा लूँगा. आज भी वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ है. Because a very honest distributor. पर लोगों की आदतें बदल जाती हैं. When Chandni was premiered in Metro, lot of messages have been passed through the country. Another flop is coming. Don't sign theatres. Don't give them theatres on MGs. And when I was having a party at the Taj, I knew the buzz of the people. We have seen and देखा यार फिल्म देख के गया, चलने वाली नहीं है. तो उस वक्त कैसा लगता है यश जी जब ये सुनते हो? You feel like leaving the whole party and going alone. Leaving the whole party, I feel like You leaving go the whole alone, world and going away. sit around, क्या करूँ मैं? But next morning it was a hit. Because I had made that film total honesty. And I knew if fight can be highlight, my song will be highlight. And all the 9 songs were highlights. Yes, they were. How I made Chandni. After that, I didn't want to compromise in making a film. I say, you may make less films, make more films, it may make more money or less money, but your heart, your honesty should be there. And I want to come back to this whole question of आप इतने conservative family से हो, जहाँ पे आपको director बनने का शायद chance नहीं मिलता था, लेकिन आपकी mother ने, आपके भाई साहब ने help की, mother ने इतना encourage किया. आप जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपके जो topics होते हैं फिल्मों के, वो इतने अतरंगी क्यों होते हैं? वो इतने अब तो बोलते हैं, देखिए यश जी की फिल्म है. लेकिन मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, फिर वो नहीं रहती हैं, उनकी बेटी होती है, फिर मैं उसकी बेटी से प्यार करने लग जाता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करने लग जाती है. एक लड़की से प्यार करता हूँ, दूसरी से भी करता हूँ, फिर दोनों से शादी करके खुश रहता हूँ. और एक अभी आप खुद ही बता रहे थे कि उसको मैं प्रेग्नेंट कर देता हूँ, फिर वो भाग भी जाता हूँ. मतलब कुछ अलग सा और भी हैं बहुत सारी. तो आपके दिमाग में you being so conservative, you being so gentle, you being so honest, you being so earnest, how is this all this moral and social fabric does not surround you? या आपको लगता है क्योंकि कोई छिछोरापन कभी नहीं होता उस बातों में, घटियापन कुछ नहीं होता, वो भी खूबसूरत ही लगता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार देखकर तो मुझे लगता है कि मैं भी यही करना शुरू कर दूं, इतना अच्छा लगता है. बट क्योंकि आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप करने नहीं देते. बट द होल हाउ डज दिस स्ट्रेंज डाइकोटमी एग्जिस्ट? ये दो चीजें कैसे एक ही इंसान में हैं कि conservative, love, gentleness, and then suddenly a topic which is... This word you use is honesty. हर human being की सबसे बड़ी desire जो है to be loved more and more, again and again. If somebody says I've loved and बस हो गया, is somewhere telling a lie. तो एक बार हुआ फिर दिल करता है और हो, प्यार मिलता रहे. He desires to be loved by everybody. उस desire में different characters की life में आ सकते हैं, लेकिन जिसको आप bold बोलते हैं, bold नहीं, because I don't make romantic films, what you call. I don't make romantic films. I make films of human relations.
Wow. Not romantic, but about human relations. Human being is a very complex creature. मेरी पिक्चर में कोई विलन मैप नहीं होता रोमांटिक फिल्मों में. आई बिलीव आदमी खुद हीरो है, खुद ही विलन है. डेस्टिनी हीरो है, डेस्टिनी विलन है. मैंने खुद सोच लिया कि मैं इसे लव करूंगा. ये मेरी चॉइस है ना, मेरा डिसीजन है. वो रॉन्ग भी उसका राइट हो सकता है. और इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ somebody may can come in your life again. You gain love. You gain that person. You are not being dishonest to anybody. लेकिन उस वक्त खुद आप विलेन है. Destiny villain is playing. We're talking just now. You talk about a man living with two wives. If you have seen the film, or if you remember the film, it is destiny's playing part. He's not doing anything wrong. This desire, this greed of love is a very, very complex thing. I'm not making film just to be bold for bold's sake. Yeah. I've used the word, I want to make a different film. If a boy meets a girl, loves them, some family objections come and they part of their love, this is no story. I couldn't do me. This story has to be a bit different in shape of some characters coming in his life. And वो जो desire, वो कभी-कभी उसको feel करता है, यार नहीं यार, बहुत हो गया. अब कभी-कभी story में he loves the girl, but today this कभी-कभी को release हुआ है, 36, 37 years हो गए. At that stage, he loves the girl, he can't marry her because of family won't allow. He's a poet, he becomes a passive person. Amitabh Bachchan becoming a passive person. If Kabhi would have been made by somebody else, he would have taken brand new stars. This is a very, very risky subject. Dekha jaye. Because people think you have made a big stars, you have taken an easy path. I think I've taken different. Absolutely. I've taken a difficult path also. I've spent so much money on it, so much names on it. The responsibility is too much on me. So we want to make a picture. Every time we are making different pictures. The different बनाएंगे तो different characters आएंगे. I still believe that at any stage of your life, you never say, I won't love now. I believe the person feels that he's not loving anybody, he doesn't love anybody, nobody loves him. He should not live. It's no right to live. Or if you think you don't love somebody and nobody loves you, you should not live only. Good. The whole thing is based on love. Sometimes love is just you, say boy and girl. No, there is a lot of things. I make a film, I love that for making it film. You are working with me, you're not working with just for it, you're working that. I love that project, I want to be in it. And the picture will release, people, Shah Rukh was there. I believe you should make different films. Absolutely. And, all his films always have good people in the films, but of course, doing wrong, and he believes wrong by some moral, social yardstick. But that's what life is. And that's why the fact that he even takes those wrongs with positivity and shows it with so much love and care, we seem to accept a lot of things which we may talk about when we are not watching that film. And I have unfortunately did not watch Lame Yash ji. मैं आपको आज बताना चाहूँगा. बुरा मत मानिएगा. बहुत खूबसूरत फिल्म, लेकिन मैं आधी देखी वो पिक्चर. पूरी फिल्म नहीं देखी मैंने वो. उसका एक रीज़न है. मैं मुंबई आ गया था फिल्मों में काम करने के लिए, और मैं लम्हे पिक्चर देख रहा था. मेरे दोस्त थे साथ में, विवेक वासवानी, जो मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम हॉल के अंदर पिक्चर देखने गए थे लम्हे, एंड वी वर वाचिंग इट. एंड देन सडनली माय सेक्रेटरी लेट अनवर ही केम, एंड उसने मुझे बोला, यश जी जो है एक पिक्चर बनाने वाले हैं और उसमें लगता है तुम्हें कास्ट करने वाले हैं, तो वो तुम्हें बुला रहे हैं. तो मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा सिलसिला चल रहा था आपके साथ बहुत पहले विवेक सिनेमा से, तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि आज बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं कि नहीं. मैं लम्हे आधी छोड़ के आपके ऑफिस आ गया था आपसे मिलने के लिए. सो दैट सेकंड पार्ट ऑफ लम्हे आई डिड नॉट वॉच बिकॉज ऑफ यू, विच आई विल सी लेटर. And we move on to the years of 90s, which I call the modern era of Mr. Yash Chopra, because उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाई, ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 90s भी नहीं बना सके और शायद अब भी नहीं बना सकते. He made a film called डर, जिसके अंदर जो one of the protagonists
he actually introduced I think the term protagonist. Hero type ही होता है हिंदी फिल्म के अंदर. So the protagonist was kind of negative, so to say, to make it simple. और लेकिन फिर भी पैशनेट था, प्यार करता था. फिर उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई जिसमें पूरा जो डांसिंग या गाने जैसे पिक्चराइज होते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत एक अहम हिस्सा है, उनका पूरा एक टर्न अराउंड कर दिया. ऐसे कोरियोग्राफर के साथ काम किया जिसने शायद पहले फिल्में कभी की नहीं थी, शामक. एंड एवरीबडी आई रिमेंबर बिफोर दैट फिल्म यूज्ड टू से, अरे यार यस जी अभी क्या थिएटर पे डांस पे फिल्म, यार अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया है. इट वॉज मोर मॉडर्न देन एनी एग्जिस्टिंग फिल्म ऑन दोज सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम. दिल तो पागल है. उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो आई एम श्योर यस जी हिमसेल्फ मस्ट हैव पास्ड इन हिज एज एंड हिज टाइम, माय फादर डिड, द पार्टीशन, which is kind of forgotten for the people of our era. He reintroduced and made people realize this cross-border love story through Veer Zara. So ये इतनी अलग-अलग किस्म की फिल्में 90s के अंदर उन्होंने बनाई. I really think apart from this wonderful films that he's made before, this was a huge change around. और इस change around के अंदर एक चीज common थी, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. सही नहीं लगता है मुझे. भूल रहे हो, एक चीज कॉमन थी वो. हाँ प्लीज. क्या थी? शाहरुख. लेकिन तुम ये भूल रहे हो. आप पूछा नहीं सवाल किसी ने मुझे, आज तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया. मैं पूछना नहीं चाह रहा था, यू नो दैट, मैं ऐसी गलती से निकल गया. यू आर वर्किंग विद मी लास्ट 20 years. आई स्टार्टेड वर्किंग विद यू फ्रॉम डर टिल टुडे. आई हैव नॉट सीन द हीरो. उसको कुछ कारण तो होगा. तुम्हें अगर ये गुमान है या वहम है कि इसलिए कारण है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मेरे का शायद कारण नहीं है. शाहरुख, तुम एक एक्टर हो 20 साल में जो मुझे मिले, जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है. आदि ने लिखी है या आपने लिखी है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं. तुमने कभी ये सवाल नहीं किया अब मुझे पैसे क्या दे रहे हैं. बल्कि अगर मैं लोगों को बताऊं, किसी पिक्चर में तुमने एक पैसा नहीं लिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन. जो लास्ट वीक में बिफोर द पिक्चर रिलीज आई सेंड यू चेक, तुम्हारा नेक्स्ट फोन आता था, यश जी आपने पैसे ज्यादा ही भेज दिए यार. मैं ऐसा तो नहीं किया. मुझे याद है कि हमें पिक्चर बनाते मैं तुम्हें बहुत गुस्से में फोन किया एक बार. नहीं शाहरुख, तुम मैं पिक्चर बना रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तुम आके मिलते ही क्यों नहीं यार. तुम बिजी हो माना, पर मिलो सही. तो मैं अभी आता हूँ, फैसला कर देता हूँ. तुम आए. तो बोला ये चीज मैं क्यों मिलूँ आपसे, बोलिए. मैंने आपसे क्या लेना है. स्टोरी मैंने आपसे सुननी नहीं, जो स्टोरी आपकी मैं काम कर रहा हूँ. पैसे मैंने आपसे मांगने नहीं, जो आप देंगे मैं ले लूँ. मेरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं आपके पीछे शुरू करूंगा उस दौरान मैं और काम नहीं करूंगा जब तक आपके पीछे खत्म हो जाएगी. तो मैं अभी क्यों मिलूं आपसे. कुछ चीजों में तबादला हो रहा है, नहीं हो रहा. यू टोल्ड मी कि यह चीज फिल्मों की पैसों की वजह से, किसी और की वजह से मैं फिल्म नहीं करता हूँ. फिल्म मैं करता हूँ दिल से. जब मुझे लगे मैं ये फिल्म कर रहे हैं, ये आदमी मुझे पसंद है. जब आदि लिखेगा और आप डायरेक्ट करेंगे, मुझे कुछ नहीं की जरूरत क्या है. तुम्हें याद होगा कि जब वीर ज़ारा बना रहा था मैं, तो उन्होंने बोला हाँ कर रहे हैं, ठीक है करेंगे. होते होते मेरी शूटिंग हो गई, मैं सेट लग रहा था. मैंने कहा शाहरुख, मैंने सेट लगा हुआ फिल्म सिटी में, तुम्हारा एक दिन का काम है. अच्छा आप फिक्स कर लीजिए, जब बोले मैं आ जाऊंगा. मेरी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, मैं होने की बोलेंगे मैं आ जाऊंगा. मैंने कहा तेरी कल शूटिंग है. तो आ गया. तुमने अपनी शूटिंग कैसे कर दी, तुम आ गए. क्या कपड़े हैं वो करण जौहर ने बनाए क्या, या क्या ठीक है सब अच्छा. और सेट पे आए, वो एक गाने का कंतरा ही था, आपको याद होगा. मैं कंतरा तय कर लिया सब काम. कहते आदि को बुलाया, देखो यार तुम लोग मुझे मरवा दोगे. अभी तुमने आउटडोर जाना है, सारा काम शुरू होना, ना मुझे स्टोरी पता है, ना मुझे कैरेक्टर पता है, ना मुझे कपड़े पता. वो तो बता दो आज. लेकिन गाना मैंने ठीक ठाक गा दिया था फिर भी. बहुत फर्स्ट क्लास है. मतलब आज तक अगर हमारे पे कॉन्फिडेंस है और हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है, तो इन 7 पिक्चरों में एक याद है, हमने तुम्हारे से 7 पिक्चर बनाई, 7. और बाय द ग्रेस गॉड ऑल 7 आर सुपर हिट्स. माशाल्लाह. सिर्फ एक है, हम दूसरों को एक ट्रस्ट है, विश्वास है कि हम ना तुम्हारे साथ बेईमानी करेंगे, ना तुम करोगे.
میں لوگوں کو بتاؤں آج پکچر ہماری کمپلیٹ ہے, یو ناٹ گیون اے سنگل پینی. تم پکچر بناتے ہیں, میرے پاس پیسے بنانے کے لیے بہت ریسورسز ہیں, میں ڈانس کرتا ہوں, گانے کرتا ہوں, انڈورسمنٹ کرتا ہوں, کیا پکچر میں دل سے بناؤں گا وہ کروں گا. ہمارا ٹرسٹ یہ ہے, میرا ایک اور ٹرسٹ ہے کہ یش جی جو ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکیاں چن چن کر میرے ساتھ فلموں میں ڈالیں. کوئی پیسہ پوچھنا نہیں, کچھ نہیں کرنا. ایسا کھڑا ہو جاؤں گا میں کہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر, لڑکیاں آئیں گی, گلے لگیں گے, پیار کریں گے.